Hello my dear students, today we are going to do the sample paper of session running examination for class 3 mathematics. So moving towards the first section, this is knowledge, very short answer question, 1 mark questions. 1 liter is equals to 1000 millimeter, ये आपको याद है milliliter. Rewrite using plus sign, तो 4 into 5 का मतलब है कि 4 को 5 times लिखना है, तो आप लिख देंगे you will get 20. Numbers ending with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. Write the number is odd or even. So 1, 2, 3 and 3 is odd number. 50 decimal 75. So 50 rupees है और 75 पैसे है. Write the total money in words. This is 50, this is 10, this is 10 and this is 5. So you can add 50, 60, 70 and 5, 75. आप spelling में भी लिख देंगे. Find the hidden sentence from the secret message. So this is GOOD, good morning. Look at the pattern and continue the growing pattern. This is 15, 20, 25, 30, 35, 40, A, B, C, D, E, F. Study the chart and answer the following questions. So here is the chart. Which is the most popular subject? First of all, you need to count it. 1, 2, 3, 4. You'll write 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको आंसर्स देने में दिक्कत नहीं होगी. Which is the most popular subject? 8. So this is English grammar. How many students like EVS? So 5. Which is the least popular subject? Least जो कम पढ़ते हैं लोग हिंदी. Which subject is liked by 6 students? So 6 बच्चों को कौन सा पसंद है? Maths. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. देखिए डेसिमल सब्ट्रैक्शन को हमेशा बहुत ध्यान से करना चाहिए. सबसे पहले आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लीजिए. देन 5 minus 5 is 0, 7 minus 2 is 5, 9 minus 4 is 5, 4 minus 1 is 3. 10 sevens are 70 and here it is 3 into 2 is 6. Find the total quantity. So you have to add 250 plus 250 is 500. 500 plus 250 is 750. अगर आप ऐसे नहीं कर पाते आप साइड में रफ में लिख के प्लस करके भी लिख सकते हैं. दिस इज 1, 2, 1, 2, 4 एंड 2, 6 लीटर्स. मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई शो करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको डिवीजन करना है. सो हेयर आई डिड, दिस प्लेस इज एम्प्टी. आप यहाँ भी कर सकते थे. आपको लिखना है कि डिविडेंड कौन सा है. जो सेंटर में होता है वो डिविडेंड होता है. This is the divisor, this is the quotient and this is the remainder. So you have to write like this. Coming to problem solving, there are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. So clear है कि 21 को 3 से डिवाइड करना है. 3 sevens are 21 और candle in one box is equals to 7. Complete the multiplication tree. 35 कैसे आता है? 35 ones are 35, 7 5s are 35 and 5 sevens are 35. If one spider has 8 legs, then how many legs will 4 spiders have? Legs of one spider is equals to 8. Legs of 4 spiders is equal to 8 into 4, that is 32. So you'll write 32 legs. Given below are the pictures of weights. Now you have to make 7 kg sugar from this only. So 5 plus 2 you can take. And then for 20 kg, 10 plus 5 plus 5. Moving towards the next question. Find the money paid by the customers at the toy shop. Rupali buy 2 toy cars and a toy train. So 1 toy car is 75. 2 toy cars, 75 into 2, that is 150 rupees. 1 toy train, 10 rupees 25 paise. So total money spent is this 150. You have to add 10 decimal 25. तो यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा. जिस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता उसमें डेसिमल लास्ट में होता है. आप इस बात को याद रखेंगे. 150 डेसिमल 00 लिखेंगे और डेसिमल के बाद ही 25 आएगा. 25 सॉरी. फिर आप इसको प्लस कर लेंगे. 2061. सो दिस इज 160 रुपीज 25 पैसे. विहान बाय 1 टेडी बेयर एंड अ डॉल. सो 1 टेडी बेयर कॉस्ट 25 डेसिमल 50 and 1 doll cost 200 rupees. Again you have to do like this. 200 decimal 00 क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब लास्ट में है. और 25 decimal 50. So you'll add this all 0, 5, 5, 2, 2.
So your answer is ₹225.50. I hope you have understood. अगर नहीं समझ में आया, you can text me. So I'll repeat this decimal addition and subtraction once again. Keep on practicing. Best of luck.